Dear parents, Namaskar. Cordial greetings to you all. Dear students, Namaskar and lot of love from all the faculties and entire MDBM fraternity to you all. Hope that you and your families are keeping safe and you all are keeping good health in this current situation. I wish good health and good time to you all. Stay at home and take care of your parents, and I request your parents also to take care of your ward and stay at home. Now, there are few things which I would like to discuss with you today. Number one is from tomorrow we will be switching over to study based app instead of Zoom. The study based app to be downloaded by all the students on their mobile phone, and the classes will run from 8 a.m. to 2 p.m. as per the timetable of different classes. Now all teachers will make sure that all the students have downloaded the app and they have registered on the study base app. I request all the parents that you make sure that by evening today you are connected with the concerned teacher and there is no any kind of hindrance in tomorrow's class. Complete all your doubts, complete all your deficiency what you have in your app, and let us start a new day from 1st of May 8 a.m. That is regarding your online classes. ऑनलाइन क्लासेस के बारे में मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि कल से हम स्टडी बेस ऐप के थ्रू क्लासेस लेंगे जो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगी, और उस क्लास के लिए आपको स्टडी बेस आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आईफोन और दूसरे सभी फ़ोन्स में गूगल ऐप्स के थ्रू भी डाउनलोड की जा सकती है, और जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लें उसके बाद में इसको रजिस्टर करना है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो सभी बच्चों से निवेदन है कि वो अपने क्लास टीचर से कांटेक्ट करें और आज इवनिंग तक इसको पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको तैयार रहना है, जिससे कि हम कल इजी हैंड क्लास ले पाएँ। Second point, now in the current situation still we are not aware that when we are going to open the school. So what we have planned is your attendance on the online is compulsory for all. Everybody has to attend the class. There is no second thought that I was not having the mobile phone, I was having this issue and all these things. You have complained me that sir, we two students are there, the timetable is same, so we have tried to adjust your timetable in different slot right from 8 a.m. to 2 p.m. So आपकी जो थोड़ी सी दिक्कत मोबाइल फ़ोन को लेके थी कि एक ही फैमिली में एक ही फ़ोन है, 2 बच्चे कैसे अटेंड करें, उसको भी थोड़ा सा हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। बाकी मैं थोड़ा सा पेरेंट्स से निवेदन करूँगा कि कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से हम ये सोचें कि हमारा बच्चा क्लास अटेंड करे, क्योंकि अब और कोई जरिया नहीं है। हम लोग आपके पास इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू पहुंच सकते हैं, और अगर आपका बच्चा हमसे कनेक्टेड रहेगा तो उसकी स्टडी जो है वो हम पर नहीं होगी और वो रेगुलर स्टडी कर सकता है। इसके बाद में अगले पॉइंट पे मैं आऊँगा। अगला पॉइंट है आपकी फ़ी को लेकर के। आपकी फ़ी जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किए, दिल्ली हाई कोर्ट के भी डिसीजंस आए, अलग अलग गवर्नमेंट्स अलग अलग तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस भी आ रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स सक्षम हैं उन सबको फ़ीस जमा करानी चाहिए, और इस महीने की फ़ीस भी अपलोड कर दी है। और आप सबके लिए एक खुशी की बात यह है कि हमने लास्ट मंथ की फ़ीस में भी आपके लिए कोई ट्रांसपोर्ट फ़ीस इंक्लूड नहीं की थी, और इस महीने हमने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी अपलोड कर रहे हैं। बाकी जो आपकी लैब फ़ीस है, कंप्यूटर फ़ीस है, और आपका जो ऑनलाइन क्लासेस के अलावा जो और फीस है आपकी ई लर्निंग की, वो सब फीस हमने ऐड नहीं करी है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमें भी, ये निवेदन पेरेंट्स से है, आप हमें भी अपना ही एक हिस्सा समझें और ये देखें कि जिस तरह से आप सुव्यवस्थित ढंग से अपना घर चला रहे हैं, हम भी सुव्यवस्थित ढंग से हमारा घर चलाएं और हमारी ड्यूटी भी साथ साथ करते रहें। तो टू कीप अप द मोरल ऑफ द टीचर्स, I would request each one of you to kindly pay the fee, and with that I would again put a request that if you have any kind of issue and if you are rather
In need of anything, you kindly contact to us. We will be helping in all respect for any kind of help to you. If you are capable enough and at comfort on your financial conditions, then only you should pay the fee. Rest, ask your ward to take the class on regular basis, and they should not miss even a single class. Next point is, most probably we are planning to conduct online test from 20th of May. So ask your child what they are learning. They should rather have the self-study in the evening so that they can spend some time with their books and they can learn. The first term test will be conducted from 20th of May. So each and every child should connect to the teachers, and some parents, those who are rather not having the smartphone, they may face the problem. So I request each one of them to kindly connect to the teachers through phone, and the teacher will guide them, and if visible, if they are rather somehow able to take the notes by some of their friends WhatsApp number and all, we will be sending the notes to their WhatsApp number what they give. But for tomorrow's class, once again I'll take the reminder of my 3-4 points. For tomorrow's class, download the StudyBase app and register yourself. If any issue comes, kindly contact to the teachers of respective class and make sure that your child is ready for the tomorrow's class. Second point is regarding fee. If you people are rather capable and comfort at your financial situations, kindly deposit the fee so that teachers also can have the comfort time, and other staff, those who are working in the school, they also can live a comfortable life. Third point is regarding your attendance and test. So we will be marking your attendance on the regular basis and it will be counted against your examination. Your first term exam we will be taking online, and that will be from 20th of May. So kindly be regular in your class and learn what your teachers are teaching on day-to-day basis. If any doubt is there, you can individually contact to your teacher and connect to your teacher at all time. Be perfect and professional in your academic life and take care of your health, take care of your parents' health, and at the same time, one request from the parents, kindly connect your child to the online classes and take care of their health. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat.